दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कोई जज खुद कोर्ट में फैसले लिखता है, लेकिन उसकी अपनी पोस्टिंग का फैसला कोई और लिख देता है? हाँ, यही कहानी है जस्टिस अतुल श्रीधरन की। और इस कहानी में मजा भी है, मसाला भी और सवाल भी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहले तो कहा, हम श्रीधरन जी को छत्तीसगढ़ भेजेंगे। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने धीरे से कान में कहा, भाई थोड़ा रुकिए, दोबारा सोच लीजिए, कॉलेजियम ने कहा, अरे हाँ, सही पकड़े हैं, दोबारा सोच लेते हैं। और नतीजा ये कि जज साहब का टिकट छत्तीसगढ़ से इलाहाबाद कट गया। अब बताइए, ये हुआ न्यायिक निर्णय या सरकारी सुझाव पर पुनर्विचार? अब जरा पिक्चर का बैकग्राउंड समझिए। जस्टिस श्रीधरन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। कॉलेजियम ने अगस्त में फैसला किया था कि उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भेजा जाए। वहां वो दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ जज बनते, यानी कोर्ट की हायरार्की में उनकी बात, उनकी मौजूदगी और उनकी ताकत सब ऊंची होती। लेकिन जैसे ही सेंटर से फोन आया, मंजिल बदल दी गई। अब वो जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां वो 7वें नंबर पर होंगे। मतलब सीधी बात, सीनियरिटी डाउन, इफेक्टिवनेस डाउन और सिग्नल अप। तो 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने की। इस बैठक में सरकार ने स्पष्ट अनुरोध किया कि पहले की सिफारिश को फिर से देखें। कॉलेजियम ने औपचारिक रूप से इस अनुरोध पर विचार किया और नया प्रस्ताव पेश किया। जस्टिस श्रीधरन को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजा जाए, न कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। आधिकारिक वेबसाइट पर भी रिजोल्यूशन में यही लिखा गया है। अब ये इलाहाबाद ट्रांसफर अपने आप में दिलचस्प है। इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जहां केसों की लंबी कतारें हैं। कुछ लोग इसे सीनियरिटी के लिहाज से अच्छा मान रहे हैं, लेकिन कई लॉबिस्ट और कानूनी जानकार इसे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट मान रहे हैं। और याद रखिए, पहले प्रस्ताव अगस्त 2025 का था और अब अक्टूबर में बदलाव आ गया, यानी महज 2 महीने में पूरी मंजिल बदल दी गई। जस्टिस श्रीधरन कोई आम जज नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई अहम फैसले दिए हैं, PSA, UAPA जैसे मामले और मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुमोटो कार्रवाई। ऐसे जज का ट्रांसफर हमेशा चर्चा में रहता है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या यह महज ट्रांसफर है या एक साइलेंट मैसेज? और यह सिर्फ श्रीधरन का मामला नहीं है। इसी बैठक में कुल 9 हाई कोर्ट्स के 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिशें की गई हैं। मतलब देश भर में न्यायपालिका में पोस्टिंग ड्रामा चल रहा है। और जनता के लिए यही सवाल बड़ा है, क्या न्यायपालिका अब सुझाव आधारित चल रही है या स्वतंत्र निर्णय लेने वाली है? कॉलेजियम ने लिखा कि यह रिकॉन्सिडरेशन के बाद हुआ, लेकिन कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि जब केंद्र की इशारा से फैसले बदले जाते हैं, तो जनता को लगता है कि न्यायपालिका में स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है, जैसे कि जजों की पोस्टिंग भी अब किसी रणनीति का हिस्सा बन गई हो। सोचिए, जज पहले छत्तीसगढ़ जाएंगे, फिर अचानक इलाहाबाद भेज दिए जाए। एक तरफ अधिकारी कहते हैं ये प्रशासनिक निर्णय है, दूसरी तरफ जनता और कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं ये पैटर्न खतरे की घंटी है। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रिजोल्यूशन में साफ लिखा है, ऑन रिकंसिडरेशन सॉट बाय द गवर्नमेंट। अब सवाल यह है, क्या न्यायपालिका सरकार के अनुरोध पर इतना प्रभावित हो सकती है? और जब कॉलेजियम कहता है कि हम स्वतंत्र हैं पर संवाद रखते हैं, तो जनता सोचती है कि संवाद की लाइन कहां तक स्वतंत्र है और कहां से दबाव शुरू। तो अंत में यही कहानी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सवाल बाकी हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, ट्रांसफर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर और सरकार कॉलेजियम के रिश्ते पर। और जनता सोच रही है, अगर जजों का ट्रांसफर ही अब इतना पॉलिटिकल है, तो आम आदमी का न्याय कहां सुरक्षित रहेगा? My Lord, the Chief Justice, Justice Massey and Justice Oak, my Lord. The first thing which comes to our mind when we think about Justice Oak is a tireless judge, my Lord, a workaholic who has never, my Lord, been seen ill-prepared. And in fact, my Lord, the problem was the Lordships were more prepared than us, my Lord. And this is a genuine right-handed compliment, my Lord. Your Lordships have always read everything. Lord, the most amazing thing, my Lord, which I personally find amazing is that despite, my Lord, such an irreparable loss yesterday, your Lordships put duty first, duty as a judge first. Otherwise, my Lord, your Lordships had an option of delivering judgments virtually also. But, my Lord, this is what, my Lord, which all of us will have to learn to put duty first. Lord, I am not here, my Lord, to advise your Lordships, my Lord, but I'll take the opportunity. Please spare more time for the family. The work schedule you must have followed must be such that your family also may take time to adjust with your continuous presence because you must
always been in your chamber working for the matters. But this is their rightful claim, and don't close any options. Your Lordship's services are required, my lords. I wish your Lordships a very good health and a very good second career of your Lordship's choice. And Third career. third career, my lord, I stand corrected, my lords. I stand corrected. And though your Lordships may not believe in God, but I am a believer, my lord, I pray that may God always be by your side. Thank you. Lord, one more thing. Your Lordships would also be remembered as a judge who took stand when it was required, my lords. In fact, my lord, me and Raju were almost in every case, my lord, on the wrong side of your Lordship's judgment. At the receiving end. At the receiving end. But, my lord, as I have said, that our respect and love for a judge can never depend upon the relief which we got or we did not get. Lord, thank you for being what you are. Thank you. May I, Lord, on behalf of the entire Lord Bar Association, first of all, Lord, offer our very, Lord, heartfelt condolences for this very tragic thing which has happened, Lord, to your Lordships yesterday. It is your Lordship's, Lord, sense of duty, which is the reason why your Lordships are here today. Your Lordship's commitment to the cause of justice is exhibited by the fact that you went for the cremation and came back here today to be with us for your delivering your judgments, and also, Lord, to be with us for this, giving us this occasion, Lord, to speak about your Lordship's career. Lord, it is a matter which I can say on behalf of all the members of the bar that we never felt that any face matters before your Lordships. We never felt, Lord, that if there was a point involved in the matter, you will not get relief. We went back many times even without getting a relief, but we never ever felt that that justice has not been done, Lord. So Lord, I'll reserve the rest for the evening, Lord, but I, Lord, very, Lord, sincerely hope that your Lordships have a very, Lord, meaningful third tenure. Of course, your Lordship will miss your Lordship's mother, because that is something which I thought your Lordship would have cherished after retirement. But that is not God's will. Nobody can, Lord, change that. But I'm sure, Lord, your Lordship's health, the rest of your life will be very healthy, meaningful, and as, Lord, fruitful as your Lordships have been so far to the institution. Chief Justice, this is Masi, this is Hope. The first name of my lords and the third name of my lords has already been widely known. It is the middle name of Srinivasa. Lordship's name had the Lord itself. You were a born judge, and throughout your life you have dispensed divine justice. Without any favor, without any ill will, true to your oath. And when in this moment of your extreme personal grief, you have come for the call of duty, on behalf of our association and members, we wish you well, always. My Lord, first of all, our deepest condolences. What can I say? When some judge leaves, such a vacuum is created that he can never be replaced. That's what I feel today. You know, the Constitution of India had a vision of certain socio-economic goals. And we in the country and the institutions of the country had to work together to realize those goals. But ultimately, the thematic thread that runs through our Constitution is liberty. That's the thematic thread, because the history of civilization is a history of strangulating liberty. Empires have been lost because they strangulated liberty. Slavery vanished because it strangulated liberty. Dominance of cultures, dominance of states. If they wished to strangle liberty, people rose. And therefore, a judge will be remembered only, and those are the judges in this court who will be remembered, when the cause of liberty is served through this institution. Which is why we remember Justice Khanna. Which is why we remember how ADM Jabalpur was bad. Which is why we remember Keshav Nand Bharti.
which is why we remember Patanjali Shastri's judgments. Why? Because the thematic thread of liberty was protected by this court. And you symbolize that. You protected liberty like none else did in this court. And I remember the words of Patrick Henry in the revolution, in the American Revolution, when he said, "Give me liberty or give me death." And John Donne, the famous poet, said, "Give me liberty, for were paradise my prison, I would love to leap the crystal walls." You have leapt that crystal wall that enslaved people in this country, and we salute you for it. Thank you for being what you are and what you were. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।